Namaskar, this is Dr. Tushar Shah. This is the December month of 2020. We welcome you to this latest program by PiE, the platform for intelligent edutainment, called Ek Dose Gyaan, Ek Dose Muskaan. This is the pilot episode. So, welcome aboard. Today's Gyaan portion is on referred epigastric pain. There are three causes of referred epigastric pain that we cannot afford to miss. The first is myocardial infarction. Sometimes myocardial infarction will cause pain only in one location, the epigastrium. And at that time, how do you suspect that this is myocardial infarction? Remember, the pain is severe, but severe pain can occur in pancreatitis, in gallstone colic, in peptic ulcer. Remember, the pain will often be with vomiting and diaphoresis, that is excessive sweating. But vomiting can occur in several other causes. Sweating can occur in almost any condition which causes acute pain. But if the pain is waxing and waning, then think of myocardial infarction, especially in a person with risk factors. This cannot be missed. Remember, the epigastric pain of myocardial infarction usually does not radiate to the arm, the shoulder. Also, epigastric pain of myocardial infarction is not associated with retrosternal burning. Retrosternal burning by itself can be a symptom of myocardial infarction, but epigastric pain with retrosternal burning, no. Also remember that if the patient has had a myocardial infarction or even angina before, the pain characteristic usually repeats itself in the same location, in the same character. So if the patient says that he had pain previously in the lower jaw and today it's epigastrium, then it's unlikely that this epigastric pain is myocardial infarction. So don't miss myocardial infarction as a cause of epigastric pain. If you are in doubt, which of course is very natural, then as you send the patient to the hospital for an EKG or admission, at least even in these patients, give a Disprin, even though it may increase gastritis if gastritis is the cause of pain. Give a PPI and aspirin and send the patient to the hospital. Second cause of referred pain, which I would like to talk about, is gallstone colic. We all know that gallstone colic typically occurs in right hypochondrium, but occasionally it occurs in the epigastrium without right hypochondriac pain. If epigastric pain occurs repeatedly, a fixed period after a heavy meal, think of gallstone colic. There are very few causes of epigastric pain which will cause pain, say, after 1 hour of eating and typically eating a fatty, heavy meal and with previous history of similar pain. Gallstone colic is not difficult to diagnose. One small pointer is that if the pain lasts for more than 5 hours, then probably the acute colic has now converted itself into an acute calculus cholecystitis. Usually the colic pain lasts less than 5 hours, even typically less than 2 hours. The third cause of referred epigastric pain that I want to talk about is acute appendicitis. We all know that acute appendicitis pain typically occurs, classically occurs in the right iliac fossa. But we also know that the pain does not start there. The pain typically starts in the epigastrium or the periumbilical region and over hours migrates down to the right iliac fossa, or the right lower quadrant. That's the classic story of appendicitis pain. So how do you diagnose it while it is still in the epigastrium? 2 or 3 symptom clues. Nausea or vomiting never starts with the pain in appendicitis. If there is vomiting at the beginning of pain, this is unlikely to be appendicitis because vomiting follows pain by a few hours. If fever occurs with the onset of pain, unlikely to be appendicitis because fever occurs even after vomiting occurs. If there is no anorexia, then it is unlikely to be appendicitis because anorexia is an important needed symptom of acute appendicitis. So there are several clues just in symptomatology
to guide you to the diagnosis of appendicitis. Well, that was the Gyaan portion of Ek Dose Gyaan, Ek Dose Muskaan. The Muskaan portion follows now. नमस्कार. दिलावर फिगार नाम के उर्दू शायर हैं. उनकी 4 पंक्तियां हैं. भारी उर्दू थी इसलिए मैंने कुछ शब्दों को अंग्रेजी हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है. दिलावर फिगार लिखते हैं कि ऐ मेरे अनबॉर्न बच्चे, ऐ मेरे फ्यूचर चराग, ये नहीं कि तेरे आगमन की अब ख्वाहिश नहीं. ही इज एड्रेसिंग द ग्रेविड यूट्रस ऑफ हिज वाइफ. ऐ मेरे अनबॉर्न बच्चे, ऐ मेरे फ्यूचर चराग, ये नहीं कि तेरे आगमन की अब ख्वाहिश नहीं, और थोड़े दिन ठहर जा अपनी माँ की कोख में, इस महीने के बजट में कोई गुंजाइश नहीं. Urdu has a very elegant phrase for referring to somebody who is pregnant. ये उम्मीद से है. While the equivalent Hindi phrase is इनका पाँव भारी है. बस इस भारी पाँव की बात अपने एक दोहे में कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास पति पत्नी की तब देखो लाचारी. मिडिल क्लास पति पत्नी की तब देखो लाचारी जब पति का हाथ तंग हो और पत्नी का पाँव भारी. The commonest cause of epigastric pain the world over is hunger and hunger pangs. इस पर मेरी 4 पंक्तियां हैं कि एक दिन मेरी घरवाले ने मुझसे पूछा, सुनिए, ये रैट रेस किस बला का नाम है? ये रैट रेस किस बला का नाम है? मैंने कहा, भगवान सुन, ये जो हमारे और हमारे बच्चों के पेट में चूहे दौड़ते रहते हैं, वो न दौड़ें इसलिए जो हम दौड़ते रहते हैं उसे रैट रेस कहते हैं. If hunger is at one end of the spectrum as a cause of epigastric pain, at the other end is gluttony, and Mumbai city is the epicenter of gluttony. पेट पूजा के वास्ते मुंबई है तीर्थ धाम. पेट पूजा के वास्ते मुंबई है तीर्थ धाम. कैलाश पर्वत में सुबह गुजरे, हो गोकुल में शाम. कई लोगों के लिए चौपाटी पे भेलपुरी खाना उतना ही ज़रूरी होता है जितना बाबुलनाथ के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना. कई लोगों के लिए हाजी अली जूस सेंटर को विजिट करना उतना ही अनिवार्य होता है जितना हाजी अली दरगाह पर माथा टेकना. कई लोगों के लिए वड़ा पाव खाना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना वड़ा पाव खाने जितना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता. My wife is a nutritionist. She is an anti-gluttony activist. मुझसे अक्सर कहती हैं कि why don't you join some gym or aerobic classes? और यहाँ अपना तो ये हाल है कि whenever I feel like exercise, I lie down till the feeling passes. और जिम गया भी तो ट्रेनर ने मुझसे कहा, ठीक है, कल से कुछ लूज कपड़े पहन के आ जाना. मैंने कहा, लूज कपड़े होते तो जिम आता ही क्यों, ये तो बताना. और मुझे स्ट्रेचेस और क्रंचेस करवाने की नाकाम कोशिशों के बाद मेरे ट्रेनर का यही मत है कि मुझे फिजिकल इंस्ट्रक्टर की नहीं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ज़रूरत है. और मैं तो कहता हूँ ये योग, ये मॉर्निंग एक्सरसाइज, ये सब हमारा ईगो, हमारा अहंकार बढ़ाते हैं. रोज सुबह बड़ों के पाँव छूने चाहिए. ये सब हमें खुद अपने पाँव छूना सिखाते हैं. पत्नी जी की हर तरकीब उनकी एक्सपेक्टेशन से अलग अंजाम लाती है. मेरा पसीना बहाने को ट्रेडमिल की मशीन खरीदी थी, वो अब सिर्फ कपड़े सुखाने के काम आती है. Thank you so much for watching this pilot episode of Ek Dose Gyaan, Ek Dose Muskaan. We hope that you will subscribe to our YouTube channel and enjoy the rest of the episodes. Bye-bye.